We are live now. Welcome back to Vyapaar Jagat TV, and we are celebrating Fempreneur 2023. Celebrating womanhood is not just for a day, it is for the entire year. And we are trying to bring the best out of it, celebrating the most of the moments here on our virtual events and focusing on the subjects of female entrepreneurs. So if you missed the previous videos, please you can again go to Vyapaar Jagat TV on YT, and you can have a look at all the videos and all the subjects we have covered previously. And coming back to this session particularly, we have Naisargi Shah with us, who is going to moderate and celebrate this woman entrepreneurship with homepreneurs and mompreneurs, who will be sharing their success stories, because success is a cake that was not baked in a day. So that is how we actually need inspiration, we actually need lessons from you, hearing your success stories. And I welcome Naisargi ji once again on our platform for moderating this particular discussion of our panel about mompreneurs and homepreneurs sharing their success stories. And let me introduce you to Naisargi Shah. She is a certified NLP trainer, NFNLP USA, accredited transformational coach, and certified soft skill trainers with 18 years of experience in corporate world. And she worked to cultivate the freedom, hope, and healing for corporates and individuals through evidence based counseling. She combines her treatment approach with trauma healing to help an individual find their personal worth and value. And to uh, and she has trained more than 5,000 professionals to achieve mindfulness, and many others to come with her. So, welcome, Nesargi, and please take the charge of this discussion. I hope it would be a wonderful discussion, and many of the audience will get a lot to learn from this discussion. Thank you, Jalpan, for introducing me again today. But yeah, I would start with something very important. The progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything in the world. And the women's are the power of it. Yeah, they change, they make a change and make a difference, and they achieve the success. Yeah. So good afternoon, everybody. Hello once again today. Who all are watching us live today. And thank you, Dr. Praveen and Vyapaar Jagat, for giving me this platform and opportunity as a speaker, right? Sharing my vision and ideas, success stories of others, and which is making more powerful, enriching other women as well, inspiring others. That कुछ तो आज करते हैं, कुछ motivation मिल जाएगा. And let me introduce myself here. Of course, Jalpan has introduced me. But I always like to give an introduction about myself because that is a proud moment. Always I say that introduce yourself is something very powerful thing. So I'm Naisargi Shah, certified NLP trainer, certified transformational coach, accredited with an NFNLP USA, soft skill trainer, specialized in body language and the emotional intelligence. Turned to finance student to HRian, with an 18 years of experience in the corporate world, with that insight of in personal and professional life. There is life creating that enrichment to reach that goals, achieve that professional attire, achieve that professional goals, so that everyone can reach there, and to be limitless, to be what you are. Mother of 2 boys and a dog, driving my own company and passionate to fulfill my dreams. And through my journey of my career of 18 years, what I have learned is like, there have been different people, vivid people in my experience. Like every day there was new incidents which was teaching me something or the other. But why I am into this profession, I always tell this, the purpose behind my profession is to enter into this profession was that I have seen that successful people are there.
wonderful degrees are there with them. Best degrees, doctors होते हैं, engineers होते हैं, gold medalist होते हैं. But they sometimes fail when they are actually on the platform where they have to perform. उनके platform पे आके वो fail हो जाते हैं. I have seen people backbinding them. And from where I started thinking about this program was like, यार ये इतना सारा 17 years of studies, like 12 years of schooling, 5 साल, 3 years of graduation, 3 or 4 years of graduation, वापस master degree किया, 2 years, 17, 18 years of studies, and then also they have been failures. तो क्या missing है? Then I started learning soft skills. वो भी कम लगा, NLP किया, NLP भी कम लगा, all stages cleared. Then also I felt there is something. So now I'm learning all the different modalities of creating more powerful yourself to create the success. So I'm here in front of you, creating a special difference with a strong belief of creating a program for women's, young millennials, those who are the future of the India, specifically India. I have not thought of internationally. Yeah, there are many, but अपने nation को आगे बढ़ाने, because सबसे ज़्यादा population is of young millennials and women's. So that is my small introduction to all of you. Before we move ahead, I would like everyone, all 4 of you, to be introducing yourself. Namrata ji, welcome. Sweetie ji, welcome. Joshna ji, Ami ji, most welcome. And let's one by one introduce. जैसे मैंने दिया, this is my passion to always share the introduction. जब अपने आप को confidently present करते हो, तो what happens is that you are creating that vibes that yes, there is something which you are, and you have put a lot of efforts for yourself. तो उसको अगर हम एक वर्ड में भी बोल सके ना कि this is me, that's the best. Yeah. Who will come first? Yes, Namrata ji. Yeah, hi. So I'll also give a brief introduction about myself. I am Namrata Vijayakar, the NV in the Enviable Design Company. If you see my logo on the left-hand side, it's the Enviable Design Company. And what do? We make sure your brand has a personality and tone of voice like each one of us over here has. And it starts with a very small thing, which is your brand identity. And it's commonly known as your logo. It's like planting trees, okay? So when you want an apple tree, you wouldn't plant a cherry seed, right? Or if you want particularly golden apples, you wouldn't plant a seed of Kashmiri apples. So similarly, it's very important what kind of brand identity you have, and that's all defines your brand from start to the end. And that's what I help and bring to the table. So it's very nice. Thank you so much for the introduction. Yes, who will come next? Sweetie, you will? Yeah. First of all, thank you so much, Vyapaar Jagat, for giving me this opportunity. I'm Sweetie Gosar. I'm a psychotherapist, graphologist, graphotherapist, and working since last 18 years for kids. I have my center called Genius Brain. I am a founder and CEO of Genius Brain. अहमदाबाद में 3 सेंटर है और मुंबई में एक जस्ट रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है. व्हाट जीनियस ब्रेन इज डूइंग, जैसे अभी नैसर्गी ने बताया कि आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ करना है, यानी कि हमारे देश के फ्यूचर के लिए कुछ करना है. तो बचपन से मेरा यही पैशन था कि एक तो एंटरप्रेन्योर बनना है और दूसरा बच्चों के लिए काम करना है. कुछ अलग लगाव है बच्चों के साथ मेरा, तो मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ उनका इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए. सक्सेस की बात जब हम कर ही रहे हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए रूट्स वो बचपन में है. उसका बच्चों का कंडीशनिंग कैसे हुआ है, उनकी सोच कैसे बनेगी, वो बच्चा आगे जाके जब एडल्ट बनेगा तब वो कैसा बिहेव करेगा, उसका कंप्लीट डिपेंडेंसी उसके बचपन में है कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया, क्या सोचा और क्या उसने उस अपने बचपन में ऐसा क्या सीखा, क्या समझा. सो इट्स कंप्लीटली ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट. और रूट्स पे ही काम करना चाहती हूँ कि रूट्स इतने पक्के हो, पिलर्स इतने स्ट्रांग हो कि इसके ऊपर हम 100, 200, 300 जितने माले की बिल्डिंग बनाना चाहे बना सके. थैंक यू सो मच. Yes, Ami.
Hello everyone. First of all, I would like to say thanks to Vyapaar Jagat for providing such an amazing platform. So we mompreneurs can share our success stories with you all. So myself is Amisha. Being an IT professional, I am a certified Garbha Sanskar trainer, a spiritualist, founder of Spiritual Vibes. It's a shloka classes for kids. Junior Logic Builder, it's a coding classes for kids, and I'm working as a volunteer with some NGOs and government schools to spread spirituality among kids. And I'm a mother of 2 beautiful kids. And most important thing about me is I'm a very passionate person for preserving our Indian culture among kids. जब मैं मेरी स्टडी खत्म हुई, मेरा मास्टर्स जब मैंने फिनिश किया, तब एक ड्रीम था, आई वांटेड टू जॉइन एनी आईटी कंपनी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई कुड नॉट जॉइन. सो आई have started working as a freelancer from 2012. So I'm developing softwares and websites also. And during pandemic, I just thought that kids were spending their much more time with gadgets, mobiles, laptops, because everything was online. So at that time, I started my shloka classes and coding classes for them. And the main goal to start this coding classes is just to make shlokas their best friends. That's it. Thank you. That's wonderful. Awesome. Yes, Rosna ji. बोलिए. Hello, listening na? Yes. Oh. Hello, namaskar. Myself Chutsa Joshi. I am a traditional and Ayurvedic pickles maker. I am means इतना मैं बोलना चाहती हूँ तो बोल नहीं सकती, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरा जो जर्नी है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आज व्यापार जगत में. व्यापार जगत ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि मेरा प्लेटफॉर्म मैं पेश कर सकूं. और मेरा जो कोऑर्डिनेटर में आपने जो सहाय की कि आप बार मैंने आपसे बहुत परेशान किया, इसलिए सॉरी. पहले तो मेरी जर्नी की बात तो बाद में करनी है, लेकिन मैं ग्रेजुएट हुई संस्कृत और हिंदी में. मुझे बनना था आयुर्वेदिक डॉक्टर, बट आई एम नॉट फुलफिल डॉक्टर. देन आई एम डूइंग लॉ तक की स्टडी की मैंने. फिर बाद में सोचा कि नहीं, मुझे तो सर्विस करनी नहीं है, छोड़ दो. बाद में क्योंकि मेरे ब्लड में ही व्यापार का ही था. मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे हस्बैंड सब लोग व्यापार ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो व्यापार पे ही चले जाते हैं. तो मैं चली गई. मेरी एक डॉटर है, वो भी बहुत अभी वो भी किया है इंजीनियरिंग, लेकिन उसका भी ब्लड यही चल रहा है कि मैं भी व्यापारी करूं. अभी मैं बाद में मेरी स्टोरी बताती हूँ, अभी मेरा इंट्रोडक्शन इतना है. Thank you all of you for sharing your introduction. Thank you. हम लोग सब, we all are coming from some different background and making some difference in every people's life. कुछ कमी है उसको पूरा कर रहे हैं. That is some uniqueness which I found right now among all of us when all of them were sharing their introduction. So my question today is first is that what was that sparkling moment of thinking that and taking an action that I want to be an entrepreneur? Oh, yeah. That to be women entrepreneur, why business? Why working on it? वो क्या thought था, वो क्या action लिया, and that moment has just turned up कि नहीं मुझे तो करना है. That's what I shared in my introduction. I always share in that because वहां पे वो moment पे ऐसा होता है कि नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी gap है. And yeah, of course, when we are talking about entrepreneurship business, तो definitely मैंने वो gap गिना था कि ये बहुत बड़ा gap है. At that time, I count a gap of money also. So I count both the ways. So let's talk about it. कौन share करना चाहेगा? I'd like to share.
Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नैसर्गी ये कि ऐसा क्या स्पार्क, ये स्पार्क क्यों हर फीमेल में नहीं है? तो मेरी स्पार्क की बात करूं, मुझे तो बचपन से ऐसा था, क्योंकि मैं जब सब लोगों को देखती थी, पापा को, और घर में एज अ गुजराती फैमिली बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, तो सबको Yes. देखती थी, तब लगता है कि व्हाई ऑल मैन, क्योंकि उस वक्त तो घर पे हम ये नहीं सोच सकते थे कि किसी फीमेल को बिजनेस करता हुआ हम देखें। तो हर बार ये क्वेश्चन मेरा बचपन में आता था कि ऐसा क्या है कि ये जेंट्स ही कर रहे हैं, फीमेल क्यों नहीं कर सकती? तो वो रूट्स शायद तब भी क्वेश्चन के फॉर्म में था कि व्हाई नॉट वी एज ए एंटरप्रेन्योर। और पढ़ाई भी करनी थी, बट हमारे घर की सिचुएशन, यानी कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी हायर आफ्टर माई मैरिज, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। बट पर वो जो एक बोलते हैं ना, हम कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ होता है ना, कि नहीं हम क्यों नहीं कर सकते, Fire in the belly. यस, फायर इन द वैली। तो जैसे ही ना शादी के भले ही आफ्टर 10 years जैसे ही मुझे मौका मिला कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ, इमीडिएटली आई टुक इट। तो पहले मैंने प्री स्कूल किया, 10 साल मैंने प्री स्कूल चलाया, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है एज अ फीमेल, एज अ मदर। बच्चों को भी मैनेज करो, घर में से कुछ चीजें अलाउड नहीं थी, वी हैव टू फाइट इट कि नहीं हम करेंगे, आप क्यों मना कर रहे हो, एक रीजन तो बताओ कि क्यों नहीं कर सकते। तो ये फायर है ना तब बढ़ जाता है जब कोई मना करता है। Yes. तो ये फायर में फ्यूल आता गया और ये फायर बढ़ता गया, और वहां से 10 साल प्री स्कूल के बाद देन आई स्टार्टेड जूनियर्स ब्रेन, एंड फिर तो ऐसा था कि नाउ देयर इज नो लिमिट, नाउ वी आर अनस्टॉपेबल, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। और दिस वाज द फायर कि व्हाई नॉट वी वुमेन एज एन एंटरप्रेन्योर। और ये वाई क्वेश्चन ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया, एंड आई विश कि हम सब मिलकर, हम यहाँ पे जो लोग भी है जो सही में अपने अपने फील्ड में कुछ कर रहे हैं, और उन विमेन को इंस्पायर कर पाए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल में बहुत सारा पोटेंशियल है जो उनको भी नहीं पता है कि वो क्या कर सकती है। मुझे भी शायद अब पता चला कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, जो आज से 5 साल 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, बट करते करते पता चला। तो ये सपोर्ट की और ये इंस्पिरेशन की बहुत सारे फीमेल को जरूरत है। एंड राइटली सेड नैसर्गी की बिग गैप, हम 2% में भी नहीं है हमारे जीडीपी के एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, हम 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर सोचो कि पूरी जितनी फीमेल है वो अपना 100% डाल दे तो हमारा देश कहाँ पहुंच सकता है। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज। And possibility, and one more thing else, a very small thing बहुत सारी women सोचती है, they keep on thinking, yes, but they don't take an action because they are afraid of so many things जो कुछ है ही नहीं reality में। True. And when we think as you are a psychologist, you can understand that सही में कुछ होता ही नहीं है, हम डरते रहते हैं, there is nothing, सिर्फ एक डर होता है होगा। पर आप अगर सोचो ना कितनी चीजें हुई पता ही नहीं है। If we count out of 10, 8 are not, मतलब वो 8 फियर आए नहीं है कभी, 2 में से 1 आया होगा, शायद वो भी नहीं आया होगा, but that is there stuck in our heads and which is creating that इसीलिए मैंने क्वेश्चन में डाला कि जिसने सोचा है और एक्शन लिया है। Yes, who will? Yes, Sami. नैसर्गी जी, मैं बोल सकती हूँ एक बात? हाँ जी प्लीज। हाँ, मेरा एक सडनली एक्सपीरियंस है कि मैंने 15 दिन पहले बॉन मेरो कराया, और मेरा इतना ऑर्डर पड़ा था पिकल्स का कि मेरे हस्बैंड ने बोला जो भी हो नहीं करना है, नहीं करना है। वो डर गए थे। मैंने बोला मैं नहीं डरी हूँ, मेरा कैंसर आएगा कुछ भी आएगा लेकिन मैं करूंगी। और बॉन मेरो मैंने करवा दिया, बायोप्सी सब कुछ करवा दिया, और इतना स्ट्रांग रही। मैंने बोला नहीं करना है, तो मैंने इतना सारा ऑर्डर ले लिया कि मेरा कैंसर नहीं आया और नेगेटिव आ गया। Awesome. And that's a power of your mind. Yes. Thank you. Yes. Yes, Ami. मेरी जर्नी के बारे में बात करूँ तो it started from 2012. Once I visited to मेरी डॉटर के एडमिशन के लिए मैं स्कूल गई थी,
वहां मैंने एक सेंटेंस देखा था, इफ यू कैन, इफ आई कैन देन यू कैन। ये सिर्फ ये सेंटेंस से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। आईटी में एवरीडे नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, तो हमें एवरीडे अपडेटेड रहना पड़ता है। तो इन 2012 मैंने सभी लैंग्वेजेस, जो कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई थी, वो स्क्रैच से शुरू की। और मैंने मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर और ये वेबसाइट्स डेवलपमेंट का जो मार्केटिंग का फेज है, वो भी मैंने खुद किया, डोर टू डोर जाके। डॉक्टर्स के, फैशन डिजाइनर्स के सॉफ्टवेयर डेवलप किए, डिजाइन किए। बस एक सेंटेंस था, इफ आई कैन देन यू कैन। सो वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई। देन ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब भी सेकेंड वेव आया कोरोना का, तब मेरा पूरा फैमिली इन्फेक्टेड था। फैमिली में सबको अच्छा हो गया, बट आई वॉज इन्फेक्टेड सिवियरली। और जो 80% लंग्स डैमेज हो गए थे मेरे, और मुझे हॉस्पिटलाइज्ड किया था। उस टाइम जो एटमॉस्फेयर था हॉस्पिटल का, बहुत स्कैरी था। सो उस टाइम मुझे ऐसा थॉट आया कि बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, तो कुछ बच्चों के लिए, किड्स के लिए कुछ श्लोकास या कुछ इंट्रोड्यूस करे। तब ऐसा थॉट आया आफ्टर 2 days व्हेन आई वाज डिस्चार्ज। एंड जब मेरा रिकवरी फेज चल रहा था, नॉर्मल पर्सन से ज्यादा चला था मेरा रिकवरी फेज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था वो। तो उस टाइम मैंने मदर्स डे के दिन फर्स्ट श्लोका क्लास शुरू किया। और आफ्टर 2 months, कोविड के बाद 2 months के बाद, मेरा एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ था। कुंभलगढ़ जाते टाइम कार खाई में गिर गई, और आई हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन माय शोल्डर्स। 8 to 10 मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे इधर। लिगामेंट्स ब्रेक हो गए थे, मसल्स टॉर हो गए थे, बहुत सारी इंजरीज थी। उस टाइम भी जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, सर्जरी चल रही थी, तब भी मैंने मेरे श्लोका क्लासेस शुरू रखे थे। जब भी हॉस्पिटल में भी मैं ले रही थी क्लासेस, और उस टाइम मुझे फील नहीं हो रहा था पेन। जब मैं क्लासेस लेती हूँ तब पेन फील नहीं हो रहा है। तो वहां से मेरे ये जो श्लोका क्लासेस की जर्नी है, उसको स्पीड मिली। और बस ये जो श्लोका क्लासेस शुरू करने का एम यही था कि बच्चों को अभी जो कुछ एक्टिविटीज करते, तो थोड़ा स्पिरिचुअल हम उनको स्प्रेड करें। सो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई है। और श्लोका के बारे में बहुत सारे ड्रीम्स है, वो मुझे फुलफिल करने हैं। All the best, and I believe your purpose is very pious, very honest, very thriving, very serving to the people. I wish you all the best, because that's for the next generation to come with. And yes, and that's the most important need of these days. Yes. और अपने बोला जाता है, वेदास में बोला जाता है कि मंत्रों की जो पावर है, that is like anything, and that vibration vibes around you and creates that energy that heals you, that gives you power, and to create a new yourself. Yeah. Namrata ji, your turn. Yes, thank you. So the sparkling moment, just like it was for Ami, it was during the lockdown itself, because I think during the especially the first lockdown, where everybody was working from home, right from the CEO to the intern. We were working at home, we were juggling our work and our home with no outside help. So we all were living the same life. And at that point in time, I realized I can actually do something. I actually can balance my work life and home life, and I'm working for someone else. Why do I need to work for someone else? I can actually balance work and home by working for myself. And that was the moment, lockdown had its ups and downs, of course, but the ups were like there were so many entrepreneurs. It gave birth to so many entrepreneurs, and I'm one of them, who actually got time to think and say, no, it's time to give myself a shot. And that's how I stepped and I started my own design studio, which is called the Enviable Design Company. Though I have like an advertising career of more than 16 years, I was a creative director at Lintas.
But I was like, no, though it is 16 years, whatever I have built, it's okay to start from the scratch and start on my own. And since then, it's I've never looked back. In fact, February 1st, 2023, I completed 2 years, and it has been a wonderful journey. And thank you again, Vyapaar, Jagat, to give me this platform and help me grow. Yes, it's an amazing. Everyone has got that. Pandemic has given a beautiful chance to work and think for their own self or create something. Very small thing. When the pandemic was there, I was supposed to fly to US for my further studies. मुझे masters करना था. That was my dream. Like anything. Like I was like passion, पागलपन था. तो pandemic आया, खत्म. अभी तो जाना ही नहीं है. कोई करने नहीं वाला है. होने भी नहीं वाला है. And I was very biased with my mind that मुझे offline ही करना है. Online तो नहीं करूँगी. Because when you do it online, that energy transformation and learning capability goes down. That was in my mind and I didn't it. But yes, in the pandemic, I helped more than 100 people to get back from their worst situation. And that has given me such a big satisfaction that, yeah, I'm okay. I'll do my masters whenever I'll get good time. But now I'm not regretting. So that thing has, like, आपने जैसे बोला ना कि कुछ शुरू करना. So now I help people without reason. अगर किसी ने बोला कि किसी को इसकी जरूरत है तो I just think of it and I just jump in clinging and then do it. And that's a major shift in me, which after pandemic has taken. Yeah, that everyone has that beautiful story to share. That ye cheez that has given us that spark. My second question to all of you is, what is your purpose behind your business or being as an entrepreneur? Purpose, जैसे आप स्वीटी ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि why not we can do it? No, that is a very strong reason behind her mind. क्यों नहीं कर सकते? Why not we? Like, ये मुझे भी कभी-कभी लगता था, but I had a wonderful father who had always supported me. जा बेटा तू कर, तू जी ले, तू कर. कभी उन्होंने stop नहीं किया. So I never had that kind of problems. But yes, I have seen that many of them were suffering with that. यार नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? But yeah, I always think that what is that one purpose which gives you that idea that मुझे business करना है, entrepreneurship में जाना है? It could be anything, but yeah, you all can share. Can I? Yes, yes. तो एक तो जैसे मैंने शेयर किया कि हाँ, एक as a women why we can't, एक तो वो था ही. But why this business? वो भी उतना ही important था कि why into this field? मैं मेरे खुद के ही एक्सपीरियंस की बात करूँ तो I have seen my husband, I have seen my son, both. वो उन दोनों ने जो अपनी लाइफ में सफर किया, मीन्स वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, या जो आज उनकी स्ट्रगल थी, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक. तो वो स्ट्रगल के पीछे आई हैव नोटिस्ड कि कहीं ना कहीं उनका चाइल्डहुड था और उनका पेरेंटिंग था, यानी मेरे बेटे का सोशल सिचुएशन, ये सब देखते देखते. और मैंने 10 साल प्री स्कूल चलाई. सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जब एक इंसान के नेचर में कुछ तकलीफ है या वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा है या आज वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हम देखते हैं यंग किड्स सुसाइड कर रहे हैं, हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है आजकल, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो फाइनली क्या ऐसा है कि जो ये हमें मेंटली वीक कर रहा है, इमोशनली वीक कर रहा है. और बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इमोशनली बचपन से बहुत स्ट्रांग हूँ, वेरी स्ट्रांग. मीन्स मेरे किसी भी सिचुएशन हो या मेंटल स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा थी. तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस अगर एक इंसान बचपन से मेंटली स्ट्रांग हो और एक इंसान बचपन से मेंटली स्ट्रांग ना हो, तो उसके डिसीजंस में, उसके लाइफ में, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है. और ये बच्चों के साथ काम करते करते और समझ में आना शुरू हुआ. तो एक लाइफ पर्पस मेरा बन गया कि अब मुझे इसी फील्ड में काम करना है जहां पे मैं बच्चों के मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करूं, जहां पे आगे जाके वो ये सारी चीज बहुत स्मूथली हैंडल कर पाए विदाउट फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन.
और जैसे पेंडेमिक ने सबको कुछ ना कुछ एक रीजन दिया, मुझे एक बहुत बड़ा रीजन दे दिया पेंडेमिक ने अभी, क्योंकि मेरा फोकस बहुत बहुत सी जगह से अभी टेम्पररी एक ही जगह पर शिफ्ट हो गया, एंड दैट इज आजकल की सिचुएशन में पोस्ट पेंडेमिक बच्चे ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे जिनको अग्रेशन है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, स्पीच इश्यूज है, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, दे आर नॉट इमोशनली बैलेंस्ड। अब ये बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ना स्पेशल चाइल्ड बोला सकते हैं, दे आर नॉट मेंटली डिसेबल्ड, दे आर नॉट डिसऑर्डर्ड चाइल्ड, बट जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पीयर ग्रुप के साथ मिंगल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपना एकेडमिक स्कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद अपनी एज से 1 या 2 साल पीछे चल रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन में ना उनको मेडिकल फील्ड काम आ सकता है, ना पेरेंट्स को समझ में आ रहा है क्या करना है। और as soon as pandemic has off, उसके बाद जैसे ही सेंटर चालू हुआ मेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बच्चों के साथ डील कर रही हूँ, उन्हीं को ढूंढ रही हूँ कि जो एक्चुअली नॉर्मल है बट नॉर्मल में सेट नहीं हो पा रहे हैं, और दे शुड नॉट गो टू स्पेशल स्कूल, वो बच्चे स्पेशल चाइल्ड नहीं है बट इन बिटवीन। और ऐसे बच्चों के साथ अभी मैं स्पेसिफिकली काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल शिफ्ट हो जाए, और उनके साथ अगर काम नहीं किया गया, उनको हेल्प नहीं की गई, तो हो सकता है 3 साल में वो डिसऑर्डर किड्स में शिफ्ट हो जाए, एंड इट शुड नॉट बी। तो अभी मेरा लाइफ पर्पस बहुत क्लियर है, आई वांट टू हेल्प सच किड्स ओनली, दैट्स इट। That's wonderful. Awesome. And we all are there for you, right? मैंने Thank पूछा you so नहीं much. कि आप लोग रहेंगे, but I am there, and definitely all of them will be agreeing that ऐसा कुछ भी लगता है, कभी भी होता है, तो let us know. हाँ, Be always there. हमें उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको And हमारी due जरूरत to है। gadgets and other stuff. Yes. एक रूम के अंदर बंद हो जाने के बाद they have created that cumulativeness of illness to very high ratios. मैंने देखा है कि वो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, रिएक्ट करते हैं तो बहुत रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, ओबेसिटी बहुत आ True. गई है, दे डोंट वांट टू गो एंड प्ले आउटसाइड। Yes. समटाइम नो आई एम वेरी एक्टिव, लाइक मैं तो बहुत मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, तो व्हेन आई वेक अप माय किड्स आर हैविंग एन हैबिट, बट दूसरे बच्चे नहीं उठते हैं। दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग विद माय किड्स के यार तू तेरी मम्मी गलत है, तुझे जल्दी उठाती है। Now see the shift happening in their mind that वो नहीं उठते तो इनको भी नहीं उठना है, and they force them and that create that negativity and that chain keeps on going. So that's true. That's true. Yes. Ami, you want to share something? You're saying something. You're on mute. Unmute yourself. Yes. So I also would like to share my purpose. Why shlokas? So I'm not just teaching shloka chanting. सिर्फ श्लोका चैंटिंग नहीं करना है, और हम श्लोकास देखें तो श्लोकास आर रिटन इन संस्कृत, और संस्कृत एंशिएंट टाइम से चली आई हुई लैंग्वेज है। बोले कि भगवान जी की लैंग्वेज है तो वो भी बोल सकते हैं ये। तो जैसे हम किड्स को अदर एक्टिविटीज में रखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाते हैं, लाइक रशियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तो संस्कृत इज ऑल्सो एज मच इम्पॉर्टेंट एज अदर लैंग्वेजेस। तो हम श्लोकास को हमारे रूटीन लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मॉर्निंग की शुरुआत श्लोका से करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा पूरा जैसी मॉर्निंग रहेगी वैसा दिन रहेगा। यस Yes. मॉर्निंग हैप्पीनेस वाली होगी तो दिन भी हैप्पीनेस से फुल रहेगा। यही, और श्लोका सीखेंगे तो साथ में वो वैल्यूज भी सीख रहे हैं जो उसके साथ ग्रो होने वाले हैं। अभी वो लोग कार्टून्स देखते हैं, शिनचैन है, डोरेमोन है, तो उसमें से क्या, वो सिर्फ कार्टून्स देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, नचिकेता, एकलव्य, उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही था कि उनको सिर्फ श्लोका चैंटिंग नहीं, उसके साथ जो रिचुअल्स वो करते, स्कूल में भी करते, जो जब भी प्रेयर होती है तब वो जॉइन हैंड्स करते हैं। हमारे घर पे भी मंदिर होता है, हम एवरीडे दिया लाइट करते हैं, लैंप करते हैं, दिया करते हैं, सूर्य देव को जल ऑफर करते हैं। क्यों करते हैं? किड्स भी करते होंगे, पर क्यों?
ये सब करते हैं पर उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है, तो वो उनको बताना जरूरी है। जो वो समझेंगे कि ये रीजन है ये करने के पीछे, तो वो और खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ करेंगे वो लोग। तो यही रीजन था कि हाँ, मैं किड्स को श्लोकास के साथ रिचुअल्स, हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, तो वो सब उनके थ्रू उनको सिखा पाऊं। और मुझे हमारे जो स्लम एरिया के किड्स है उनको भी मुझे सिखाना है, उनको भी मैं सिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग फीस पे नहीं कर सकते, पर उनको सिखाने में जो हैप्पीनेस मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां हम सिर्फ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो अलग ही हैप्पीनेस वो बच्चों के साथ मिलती है। तो मेरा एक ही पर्पस है कि मुझे हर एक चाइल्ड को ये श्लोका पहुंचाना है, सिखाना है। That's wonderful. आपकी दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, like no, that is very touching that when kids are watching Shin-chan, Doraemon, उनके दिमाग में क्या चलता है कि अगर रोते हैं तो काम होता है, झगड़ा करेंगे तो मिलेगा, चीट करेंगे तो मिलेगा, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मिलेगा, मम्मी तो ऐसे ही होते हैं, जादू से कुछ भी चीज आ जाती है। डोरेमोन हैड दैट, नोबिता के लिए कुछ भी मैजिक करता है आ जाता है। But when we actually tell about these mythological stories, I used to make my son, elder one में तो कुछ नहीं कर पाई थी, younger one में I did lot of things. जब वो था छोटा तो मैं उसको हनुमान दिखाती थी, no, there was a small Hanuman, there was Ganpati story, there was Bhim ka story. I allow him to see all that. So I have seen that major shift in 2 kids, and that's a really magical thing. And when you're talking about mantras, when you are explaining them why, this young generation is very smart. अगर उनको why पता चलता है ना, they do it. हाँ, they are very strong personalities than us. वो लोग करेंगे, अपने से बेहतर करेंगे. हाँ. And that is a very, very strong. 2 things are really very strong, which you said. Yes, something else. जयतु भारतम. मैं बोल सकती हूँ निशा? Let her finish, then आप बताइए. Okay. बस एक ही सेंटेंस बताना चाहूंगी, that is जयतु संस्कृतम जयतु भारतम. Yes. That's it. That's wonderful. Lovely. Yes, ज्योत्सना जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मेरी जर्नी की मैं बात करने जा रही हूँ कि मैंने 2010 में जो इजरायली डेट्स आती है, कच्छ में उसका ग्रो होता है, इजरायली डेट्स, फ्रेश डेट्स, येलो कलर की आती है, आप डिब्बे में आती है, खाते होंगे, तो वो उसका मैं इधर खारेक उत्सव में स्टॉल करती थी। तो एग्रो वाले हमें इनवाइट करते थे और हम करते थे उसमें स्टॉल। तो उस टाइम जो उनके कमिटी वाले थे तो एक मीटिंग की, तो उसमें बोला कि ये तो सीजनल फ्रूट्स है, इसमें तो बाद में क्या करेंगे। तो घर पे आके मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो इसका भी एक पिकल्स बना ले। तो मैंने उसमें घर पे वहां से डेट्स लेके आई, घर पे गुड़ मसाला सब था। सुबह में 6 kg मैंने रख दिया बना के पिकल्स। मैंने इन्वेंशन अपने आप, ये मेरा इन्वेंशन है, अभी तक किसी ने नहीं किया है, ये रेड डेट्स का मेरा इन्वेंशन है। और ये मेरा ये जर्नी पिकल्स का स्टार्ट हुआ तो 1 महीने स्टॉल चला, उसमें मैंने 1000 किलो उसका सेल किया था। वाव। और अभी तक मैं रुकी नहीं हूँ और रुकने वाली नहीं हूँ। Awesome. और मेरा यूके भी मेरा ट्रेडिशनल पिकल्स बहुत जाता है। Okay. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब जगह जाता है, लेकिन ये तो मेरा यूके तो कंटेनर भर के जाता है। Oh. इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने और अभी मेरा इतना सारा ऑर्डर आके पड़ा है कि अप्रैल स्टार्ट हो और हमें भेज दो बस बल्क में। Oh my God. रिटेल में तो लेते ही रहेंगे लेकिन बल्क में बहुत ले जाएंगे, ऐसा है। That's wonderful. अभी मेरा बहुत कुछ आउटलेट्स जो है इस पर हमारे अहमदाबाद में, वहां मेरा पिकल्स मिलेगा आपको। अच्छा। और मेरा बिना प्रिजर्वेटिव है,
मेरा सब सर्टिफाइड है, मैंने वाटर का भी लेबोरेटरी कराया है, अच्छा, इसीलिए क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो सब कुछ करना ही पड़ता है, और डेफिनेटली। प्योरली है मेरा। और मेरी जर्नी में मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, अभी बताया आगे कि लंग्स डैमेज 80% हो गए थे, मेरा भी 80% डैमेज हो गया था। उस टाइम मैंने 1000 से भी ज्यादा केजी यूके भेजा था बना के, इसीलिए ऐसे हर्डल्स तो आते रहते हैं, लेकिन मैं करती रहती हूँ। लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, वो मुझे फिजिकली फाइनेंशियली सब सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू। That's really very touching. બહુ જ એક કહેવાય ને કે મહેનત, અને કદાચ when તમે જ્યારે બોલતા હતા ને ત્યારે એક વસ્તુ જબરજસ્ત સ્ટ્રોંગલી ફીલ થતી હતી કે જે પેશન અને જે મેડિટેશન આપણે કહીએ છીએ ને એ તમે તમારા કામને માની દીધું છે. ઓ યસ રાઈટ. મને એવું બસ એમ જ થાય કે ક્યારે મારું પિકલ્સ બને ને હું આપું, મારું પિકલ્સ બને ને આપું. આ વખતે મેં નવું પિકલ્સ એક બનાવ્યું છે વેજીટેબલનું, બધા બનાવે છે આઈ નો, પણ મેં આખું અલગ બનાવ્યું છે, મારું અત્યારે રહ્યું નથી સીઝન, હજી પતવા આઉટ ઓફ સ્ટોક થઈ ગયું છે. I like my business and my passion is બસ મને હવે એક ગુજરાતીમાં બોલી દઉં. મને એવું છે કે હું ગુજરાતી છું એટલે હું મારા પરંપરાગત અથાણા બધાને ખવડાવું, આ એક મારું સપનું છે. અને બસ બધા મારું એક નામ થાય કે આ જ્યોત્સનાબેન અથાણા વાળા, એવી એક મારી એમ્બિશન છે. અને થશે, બસ આ વ્યાપાર જગત મને એટલા માટે જ અહીંયા લાવ્યું હશે, પ્લેટફોર્મ આપ્યું હશે, અને કદાચ મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે, એ માટે થેન્ક યુ. Yes. Namrata ji, you want to share? Yes. I think for me also the purpose behind, actually for every entrepreneur, I think the final trigger is the passion and the love for what they do, you know, and it's the same true for me as well. I really love what I do. And it is also, whenever I used to design things, and when I was in agencies for so many years, I knew what I put on the table, nobody else could. But the life in an agency is completely different. In an organization, it's completely different. It's more about making more money, how much more business you get, you know, and how much you can sell. But I had a different philosophy, you know, and once I started on my own as an entrepreneur, I had it very clear in my mind that I have to build brands that are memorable. So people should remember you, you know. It, as I said, when that seed, when you put, like when you get those fruits, people should say, "Ke kahan se aaye?" Like, you know, apples kahan se aaye apples. Yes. So that is the thing, that, and that passion drives, you know, that passion drives that that honesty, and bringing that kind of touch that makes your whatever work that I do more memorable than what other people would actually put. There's no comparison as such, but that is the driving factor, I would say, you know, the purpose for being an entrepreneur. I wanted to have that personal touch, that enviable touch. That's the design company's name is also the enviable touch towards your brand. So yeah, that's how it is. Thank you so much. That's wonderful. Yeah, it's an when you're making your work as in your meditation, you know, the results are there on the table, on everywhere, not on the table, right? We can say in your smile, in your physique, in your mind, in your bank balance as well. But yeah, it is there everywhere, and I believe that's very strong about it. And last question to all of you, that is, what is the support system made you successful, or what you think about that support is in your life, that importance makes it? Correct. So I'll just go ahead with it because I was just talking about it. So I think for everyone, it would be like the support system is inside and outside. Okay. So when you start as an entrepreneur, first and foremost thing is your support system inside, which is at your home. Like they say, charity begins at home. So does a support also starts at home. Very simple and basic things like who's going to prepare meals, who's going to take care of the kids, who's going to pick them up, drop them, take them to classes, all of these things, you know.
So it's very important that you have communication with your family. People chip in to give you that support. If it's not possible, you outsource or hire people who can give you that support. And when you have that part sorted out, then you can actually concentrate on the other bit, which actually you have actually stepped out to be an entrepreneur. And there again, you start then sorting your life. But to get there, the first step has to be sorted. It has to be taken care of, So yeah, that's what I would like to say, that first get your home support sorted, and the rest of the bit you will slowly, as you climb the ladder, you'll figure out what are the other supports that you need in life. Yes, it's very important. True. Yes, I agree with Namrata कि घर का सपोर्ट हम सबको ही चाहिए और हम मिलता है तभी हम यहाँ पे हैं शायद. अदरवाइज तो हम जिन फीमेल की बात कर रहे थे कि वो करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है, उनकी जगह पे होते, बट वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फैमिली. दैट इज फॉर श्योर. मैं उसमें आगे ऐड ऑन करूँ तो मेरा सपोर्ट मेरी टीम है. आई हैव 6 टीचर्स राइट नाउ मेरे 3 सेंटर पे, एंड आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि 18 साल से मेरी टीचर्स मेरे साथ हैं. और 18 इयर्स उनका साथ ऐसे है ना कि मुझे पता है ये मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले ना. वो मुझे एक पावर देता है. ये पावर ऐसा है कि मैं हूं नहीं हूं, मैं 1 महीना घूमने चली जाऊं, मेरा काम चलेगा. और जब नहीं, बहुत बार ऐसा होता है हम काम करते हैं, हमको डर लगता है यार स्टाफ चला जाएगा तो क्या करूंगी. बट yes, it has power, but they are with me since last 18 years. And उनको देख के जो नया आता है ना वो भी टिक जाता है. पता है वो एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छा ये लोग 18 साल से तो हमें भी यहाँ पे लंबा काम करना है. So first is that, and my another support is my parents. Honestly speaking, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स है ना, शायद मुझ पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करके जाते हैं. और रिजल्ट्स जब आते हैं ना तब इतना अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं. उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन और सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कि नहीं, मुझे ये स्माइल इन 2-5 हजार नहीं, लाखों बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचानी है, तो आई हैव टू वर्क मोर. सो दैट इज माय इंस्पिरेशन in terms of support also, because they trust me like anything, and I'm so thankful to my all parents and teachers and of course family. Yes, of course. You just put it out that एक movie थी पता है सलमान खान की, किक, and he said at the last that मुझे किक आती है इन बच्चों की स्माइल्स देख के, और कुछ काम नहीं करता हूँ, but I'm doing working for it. And exactly you said that. Then smile. तूने एकदम सही पकड़ा. I'm so sorry, मैं friendly terms पे तुम पर आ गई because you are my friend. Yes, of course. You can. But this is right. मुझे वो किक मिलती है. मैं जब थक जाती हूँ ना कि यार बहुत काम कर लिया, अब नहीं हो रहा है, तब वो पेरेंट की स्माइल याद कर लेती हूँ ना, तो मैं वापस उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं अभी बहुत काम करना बाकी है. True, that's very true. And last not least, my all mentors, because I have so many mentors जो आज भी मुझे गाइड कर रहे हैं. Obviously. Yes. It should be 360 round support. Yes. Keep on rolling, yeah. Yes. Yes, जोशना जी बोलिए ना प्लीज. मैं एक मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. हेतलबेन अमीन, कल्याणी महिला विकास संघ, उन्होंने मुझे बहुत बार प्लेटफॉर्म दिया है और ये भी अपॉर्चुनिटी उनके ही द्वारा मिली है, इसलिए मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ. Yes, she is a wonderful lady. Yes, always really. Yes. Amazing lady, full of energy. I always say that energetic. तो जैसे कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो ना. Oh yeah. लो. Exactly. लेकिन as a friend, she is my best friend. Yeah, that's wonderful. Yeah. I mean, you would like to share something? For me, without support, I cannot achieve my goals. तो मेरे सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले मेरे कीज आते हैं. मैंने वहां से ही शुरुआत की थी. आइदर श्लोका हो या कोडिंग हो, उनसे ही शुरू किया था. और कोई भी बैच हो, मेरे किड्स उसमें रहते ही है.
तो सबसे पहली सपोर्ट सिस्टम मेरे किड्स, फैमिली, कोई भी हेल्थ चैलेंजेस आती है, फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर टू स्टैंड बिसाइड्स मी. सो फ्रेंड्स एंड माय मेंटर्स. और जो सेंटेंस मैंने वो स्कूल में देखा था, इफ आई कैन देन यू कैन, दैट इज डॉक्टर हिना शाह, founder of Satyamel Jayate International School. Yes. Yeah. So this all are my support system. Yes, And my ma'am, my professors of मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर वो भी है. अभी भी मैं जब भी कहीं भी स्ट्रीक होती हूँ, they all are ready to support me. That's wonderful. Lovely, yeah. It's really nice to have that people around you. And अभी आपने एक बोला ना, मैं एक छोटा सा एक स्टोरी शेयर करती हूँ. Very short story, फटाफट खत्म कर दूंगी. As you said, if you can, I can, right? In 2011 जब अपना इंडिया टीम जीता था, उसके एक साल पहले the team was gone under a motivational moments for 72 hours, right? उसमें at the end there was only one thing written on the boards, that I can. Then it was changed to we can, and the World Cup was with us. So it was a motivation which drove all of them together to move ahead. Yes, it was their goal that Sachin के लिए करना है, ये करना है, कभी कितने सालों से नहीं हुआ. There are lots of things going around, right? People were saying it is gambling and it's all thing. कुछ भी नहीं. But there was this motivation, and that session is still there, and we have seen it. कि किस तरह से उनको I can to we can में उन लोगों ने convert किया था, and that was such a powerful. So as you said, your thought which you are saying is really very powerful. And support system, आप सब लोगों ने सबको thank बोल दिया, सबको बोल दिया, everyone you said, but सबसे पहले खुद को thank बोलिए. Honest. Yes. The thanks to You myself. are the first person to initiate. वो fire in the belly जब मैंने बोला कि कहीं से वो शुरू हुआ था. It's not easy to perform like an entrepreneur, right? Men doesn't do all the works. I always say that यार उन लोगों को तो सिर्फ इतना ही करना है. And they are not emotionally attached. So उनका baggage है ना बहुत कम होता है. They are very logical. I don't say they are bad. I would like to say they are very logical. They are very counting on their own way. They are not emotional. So उनका baggage बहुत कम होता है. And we all are like, and women entrepreneurs are having lots of emotional, lots of responsibilities, lots of work to go at the same, and an obsession to be a perfection. ये सबसे बड़ा problem है. कि मुझे आज अच्छा दिखना है, मुझे आज ये करना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं चलेगा. बहुत सारी चीजें होता है. But yeah, as we go, we learn many things, and to make okay, that's everything is fine. But first of all, thank yourself. Support system within you is more important than anything else. So And well, very well you said. all are doing absolutely fine, superb, amazing, mind blowing. कुछ शब्द नहीं होते thank you बोलने के लिए. Yes. But yes, and when you are very happy, feeling proud about saying about yourself, then it makes very sparkling moment within you. Yeah. And the smile which we all are having, that's Yes, I'm proud of myself. yes. Yes. Yeah, so that's wonderful to have you all of you, and sharing your stories, insights, purpose, which is the most important for any work. आज अगर हमें कुछ भी करना है, खाना भी खा रहे हैं तो पेट में भूख लगी है तो खाया, तो that is a purpose. Oh, And yes. if you're doing something big, there should be a very strong purpose. And to believe in that purpose, you are the first person, and you're asking yourself to believe and whole world to believe in that. Exactly. So all the best for the future and every task, right? Yes. Thank you, everybody. Thank you, Thank Nancy. Thank you. Thank Nancy. you, Vyapaar. Thank Thank you. you. Anything if you all want to share something which out of this questionnaire, please don't think that you can't share that. मैंने frame इसलिए किया कि it makes very छोटी-छोटी चीजें होती हम याद नहीं कर पाते हैं कभी. Yes. But when you think of it and make it, and it gives you that kick in your mind. Like Right? you mentioned that you have to celebrate yourself first. It's very important. Like,
what we always miss is to celebrate the small victories. We always like, wo jab hoga na tab celebrate karenge, wo jab hoga na. But the small victories is very important that we celebrate, and it makes us feel good, because wo jab hoga tab hoga ki nahi pata nahi. But the small these milestones that we have, these small, it's very critical. I think for Ami also, like the smallest thing that she overcame so many things. I think every single time, if she actually does, there will be at least 50 parties she owes herself. Yes, I agree with you completely. Yes. और वो रिवॉर्ड जब मिलता है ना खुद को सेटिस्फाई करने का, वही होता है कि नेक्स्ट स्टेप ले जाता है कि चलो करते हैं आगे. एंड आई ऑलवेज से वन थिंग टू एवरीवन, हमेशा बोलती हूँ, एंड दैट इज इवन माय लाइफ्स मोटो आल्सो, कि जर्नी को ब्यूटीफुल बनाओ, डेस्टिनी अपने आप ब्यूटीफुल हो जाता है. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इट हैपेंस व्हेन द जर्नी इज ब्यूटीफुल. तो अगर प्रॉब्लम्स भी आती है तो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह मत लो, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, एक्सेप्ट इट, मूव अहेड, go ahead, keep rolling, and at the end the destiny will be so beautiful that you get a wonderful satisfaction within you. So होता है. और Yes. चीज ऐड करना चाहूंगी, कीप ड्रीमिंग. सपने देखेंगे तब अचीव होंगे. Oh, Yes. 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 And then for that, I would like to add, keep sleeping also, because proper sleep will give you a fit body and a fit mindfulness as well. And it was wonderful having all you ladies here on this platform, sharing your stories towards success, and lot more to go towards success also. And Nisargi ji, I believe that problems is a mindset, because we can't find a solution to that, and then we create it as a problem. So there is nothing like problem. If you look हम इधर तिधर, तो आपको उसका रास्ता कहीं ना कहीं से एक होल होगा जहां से एक लाइट आती है, that lighten up your world. So वो important है. Basically, I appreciate all mompreneurs and homepreneurs here who are here on this platform, sharing your stories, and very motivating to know about all the problems which you have faced and still you're moving, especially Joshna ji. I was actually so touched about your health issues which you shared with us, and still with that broad smile you are here and inspiring other women here. And we are all at your support, to each and everybody of you. Let's walk together, supporting each other and reach each other's. Everybody has a destination, but in this journey, let's support each other. Let us make a difference in at least one woman's life would be very big for us to celebrate every day. So here's the closing note for today's panel discussion about Let me add something. Let me add one small thing to your words. Yeah, sure. Your Absolutely. voice tone has been changed and your throat is getting stuck. I would like to say something. Problem का नाम Sure. बदल, solution डाल दो, अपने आप आ जाएगा. Problem नाम ही बदनाम है. Yes. Absolutely. Yeah. So this is how we end up to the another very interesting panel discussion of success stories of homepreneurs and mompreneurs, because we handle a lot of things as a social responsibility, and we are very emotional and sensitive about everything we do. We need appreciation. हमें पैसा मिलेगा वो हमें पता है, लेकिन पैसे से पहले we need acceptance, we need appreciations, we need value of our we need self-respect. That is what our jar is filled with, and that is what we are pouring to other people's cup as our love to them. Thank you, everybody, sparing your precious time and sharing your stories to motivate us, to motivate the other females who will be watching this episodes. Thank you, everybody. And to the audience who is watching this particular video on Vyapaar Jagat, please, those who are into any kind of entrepreneurship or business, do nominate yourself, as the nomination lines are open, and we are mentioning the links in the comment section. If you even have any questions related to the particular subject, you can post your question in the comment section so that we come out with a solution with the relevant speaker. Thank you, everybody.
was wonderful. Have a great evening ahead and have a fabulous weekend ahead.